Hello everyone, I am Mamta and I am here with a new video on a new topic, that is eigenvalues and eigenvectors. So let us move on to see what are eigenvalues, what are eigenvectors. We all know how to solve systems of linear equation. Also we know what is a linear transformation. So suppose we have a vector x and vector y. If a vector x is transformed to vector y with the help of a matrix, or you can say a matrix A transforms a vector x to vector y, then this transformation is a linear transformation. So x and y are two non-zero vectors. That is, suppose y is a vector, say y1, y2, yn, equal to x be a matrix a11, a1n, a21, a2n, and so on, an1 up to ann, which is an n cross n square matrix x1 up to xn. If a matrix A transforms a matrix X to matrix Y, this transformation is a linear transformation. Now suppose there exists, or suppose a vector X transforms or is uh, tran or is transformed to vector Y, which has a same direction but different magnitude, which has a same direction but different magnitude. So that means suppose we have a vector as, say, y equal to lambda x. Here lambda is acts as a magnitude. This vector x and this vector y, which is newly transformed, is having the same direction as here we have, but it has a different magnitude. Say it is multiplied by a lambda term. So from this equation, say 1, and this equation, say 2, we can have a relation as, say, ax is equal to lambda x. That is, I can further write it as a times lambda into I into x. Why ix? Because we know any vector multiplied by identity vector, we get back the same term, right? So we can, for our simplification, then we are converting this to a matrix form. This because this lambda is just a scalar multiple. That means we obtain a relation of the form a minus lambda I into x equal to 0. This is nothing but a form of a matrix equation. Matrix equation, or you can also call this as a system of homogeneous linear equation. This is nothing but a form of homogeneous system of homogeneous linear equation. That means, suppose if you observe, we know how do we represent a system of linear homogeneous equation. Ax equal to z. Z is a zero vector. So similarly, if you observe, say this is equation star. This equation star a minus lambda is nothing but a form of a matrix, right? X is a vector equal to 0. So this represents a system of homogeneous linear equation, right? And this system will have a non-trivial solution. This system will have non-trivial solution when the determinant of the matrix will be 0. As we have discussed the conditions in the last lecture or last video, that a system of homogeneous equation have a non-trivial solution if determinant is equal to 0. So similarly, this equation star, this homogeneous system will have a non-trivial solution if determinant of a minus lambda I is equal to 0. Okay, so now we have to, using this determinant term, now further we have to move on to see, or to know what are the eigenvalues. So here
the determinant form of this matrix in the matrix equation plays a vital role in finding out the eigenvalues. The eigenvalues are also known as the characteristic roots. So now let us discuss what is a characteristic determinant. As just we written, the determinant form of A minus lambda I, matrix A minus lambda I, is known as characteristic determinant and denoted as D of lambda. Whereas the particular matrix in the equation Ax equal to 0 matrix equation, this matrix is known as a characteristic matrix. Now suppose we evaluate this determinant, that is characteristic determinant, we obtain a polynomial equation. So suppose for example, if we consider a determinant of the form say 1 minus lambda 2, 2, 3 minus lambda. So when we evaluate this determinant, how do we evaluate a determinant? AD minus BC cross multiply. So this will become 1 minus lambda into 3 minus lambda minus 4. And when you further evaluate this equation, this is going to be lambda square, then minus 4 lambda plus 3 minus 4, that is nothing but lambda square minus 4 lambda minus 1. What is this? This is nothing but a polynomial equation of order 2. Because it is a 2 cross 2 determinant, that is corresponding a 2 cross 2 matrix basically, we will get a polynomial equation of order 2. So similarly for an n cross n matrix, n cross n equation, n number of equations, we will get an nth order polynomial. So further, when we equate this polynomial to 0, that equation is known as characteristic equation. A characteristic polynomial when equated to 0 gives us a characteristic equation. And we know when we solve a polynomial equation, when we factorize, we get roots, we get factors, right? So suppose we have lambda cube minus, lambda square minus 3 lambda plus 2 equal to 0. We can find the roots of this equation as say lambda square minus 2 lambda minus 1 lambda plus 2. We know how to factorize, then lambda into lambda minus 2 minus 1 into lambda minus 2 equal to 0. That means lambda की values क्या मिल गए? 2, 1. That is nothing but roots of this polynomial. Similarly here for an nth order equation, we will get n polynomials, roots, let's say lambda 1, lambda 2, lambda n. And this lambda 1, lambda 2, lambda n are known as characteristics roots, or you can call them as eigenvalues. You can also call them as latent roots. Latent is nothing but another word for eigen, or you can also call it as proper values. The meaning of the word eigen, the German word eigen, is nothing but proper. So you can also call it as proper values. Right? So now once we obtain these characteristics roots, what we will do, we will make use of our matrix equation. We have a matrix equation as A minus lambda I into x equal to 0. Now one by one, when you substitute this lambda terms, lambda values, or you can say roots in this matrix equation, we will obtain the value for x, that is the vector x, and this vector will be the corresponding vector to the eigenvalue, and hence it is known as an eigenvector. So the value or the vector value xi to the corresponding lambda I value, that is corresponding characteristic root, is known as characteristic vector, or you can call it as eigenvector. So basically यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जो भी एक मैट्रिक्स इक्वेशन होता है अब हमारे पास, सपोज तुम्हें एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स दिया गया है, उस मैट्रिक्स को क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, मतलब क्या लिखना है, a माइनस लैम्डा i के फॉर्म में लिखना है. सपोज यहाँ पे 1 2 2 1 ऐसे दिया होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा 2 2 2 1 minus lambda. This will be the characteristic matrix. Corresponding characteristic equation will be determinant of A minus lambda I equal to 0. मतलब determinant of 1 minus lambda I 2 2 1 minus lambda equal to 0. और ये जब determinant हम solve करेंगे,
फिर उससे क्या मिलेंगे हमें ए लैम्डा की वैल्यूज, और लैम्डा की वैल्यूज वो लैम्डा की वैल्यूज होगी आइगन वैल्यूज, और जब ये वैल्यूज वन बाय वन हम मैट्रिक्स इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे हमें मिलेगा आइगन वेक्टर। सो ये ऐसे ही प्रोसेस होती है 3x3 आइगन वैल्यूज के लिए भी, बट ये थोड़ी होती है लेंदी प्रोसेस, मतलब हर बार ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना 2x2 के लिए तो ठीक है, but when it comes to 3x3 it becomes a very lengthy process to take out the common lambda terms and represent it in a polynomial form. So उसके लिए हमारे पास एक shortcut method भी है. That shortcut method we will be seeing in our next video. Okay. So coming back, let us discuss a few points now. Let us discuss a few properties for eigenvalues and eigenvectors. Very important properties these are. So what is spectrum of A? The spectrum is nothing but set of all characteristic roots, or you can say set of all eigenvalues together is known as spectrum of A. Whereas trace of A is nothing but sum of डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एन n क्रॉस n मैट्रिक्स। सो यहाँ पे अगर सपोज यही मैट्रिक्स हम लोग A कंसिडर करते हैं, इसके डायगोनल मेन डायगोनल एलिमेंट्स मतलब क्या है, कौन सा है डायगोनल, ये है हो गए डायगोनल एलिमेंट्स, इसकी एडिशन मतलब 1 + 1 = 2, दिस इज नोन एज ट्रेस ऑफ A। तो ट्रेस क्या होता है, ट्रेस होता है सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, let us discuss properties of eigenvalues. So what are the few properties, why these properties, will give us or help us to directly note the values or directly solve MCQs में अगर ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चंस, वहाँ पे शॉर्टकट्स हमें होना चाहिए, तो ये प्रॉपर्टीज हेल्पफुल होते हैं। सो व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी से, द आइगन वैल्यूज ऑफ एन अपर ट्रायंगुलर और अ लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मतलब क्या, डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं, ऊपर सारे नॉन जीरो टर्म्स होते हैं। और यू कैन से अ लोअर ट्रायंगुलर मतलब डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स जीरो होते हैं, वेयरएज नीचे के सारे क्या होते हैं, नॉन जीरो होते हैं। अगर ऐसा डायगोनल ऐसा मैट्रिक्स दिया गया है तो इसके आइगन वैल्यूज क्या होते हैं, इसके डायगोनल एलिमेंट्स, जो इस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स हो गए वही उसके आइगन वैल्यूज भी हो गए। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल यू हैव अ मैट्रिक्स, से इट इज अ 3x3 मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 0 0 0। ये क्या है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसके मेन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 1 2 3, तो इसकी आइगन वैल्यूज की भी क्या होगी, लैम्डा की वैल्यूज मतलब लैम्डा 1 1, लैम्डा 2 2 एंड लैम्डा 3 3, तीन आइगन वैल्यूज because it is a 3x3 matrix, so diagonal elements will be its eigen values. Okay, further suppose lambda 1 lambda 2 lambda n are eigen values of matrix A, then A inverse के eigen values क्या होंगे, just इसका reciprocal मतलब 1 upon lambda 1 1 upon lambda 2 1 upon lambda n will be the eigen values for A inverse. Let us see third property. Suppose again eigen values are lambda 1 lambda 2 lambda n for a matrix A, तो k times A मतलब any scalar multiple with of a matrix A, k times A के आइगन वैल्यूज क्या होंगे, k times lambda 1 k times lambda 2 and so on, मतलब जो भी मिले हैं उन वो that will be multiplied by k times, that will be the eigen values for matrix Ka. The fourth property, if lambda 1 lambda 2 lambda n are eigen values of matrix A, then lambda 1 lambda to the power m lambda 2 to the power m and so on will be the eigen values of matrix A to the power m. मतलब अगर तुम्हें मैट्रिक्स दिया है, से A दिया है मैट्रिक्स 1 2 3 4, इसके हम आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, इसके जो भी आइगन वैल्यूज होंगे, सपोज अभी क्या होगा, मैं टेम्पररी लिखती हूँ, हम ए मैट्रिक्स कोई तो एक मैट्रिक्स दिया है जिसके आइगन वैल्यूज हमें मिले हैं, सपोज यही कंसिडर करते हैं ऊपर का 3x3 मैट्रिक्स, सो इसके आइगन वैल्यूज क्या है 1 2 3, लैम्डा वैल्यूज है, ये ए मैट्रिक्स है 3x3, इसके आइगन वैल्यूज है हमें पता है 1 2 3, दीज आर द वैल्यूज ऑफ लैम्डा। तो अगर मुझे a⁻2 की आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी, मतलब इस ए मैट्रिक्स के स्क्वायर के आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी, तो क्या करना होगा, इन आइगन वैल्यूज को का स्क्वायर करना होगा, मतलब क्या होगा 1 square 2 square and 3 square, that is nothing but 1 4 and 9।
these will be the eigenvalues for a square. Similarly, अगर a cube का पूछा जाए तो ये होगा 1 cube, 2 cube and 3 cube. That is nothing but 1, 8 and 27 will be the corresponding eigenvalues for a cube. तो ज़्यादा हमें multiply a को फिर से इसे मल्टीप्लाई करो, फिर a स्क्वायर निकालो और फिर उसका आइगन वैल्यूज ढूंढो, इतनी सब प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होगी. डायरेक्ट प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं. अगर a के आइगन वैल्यूज दिए है तो a रेज टू कोई भी टर्म हो, बस ये m क्या चाहिए, नॉन निगेटिव नंबर चाहिए. मतलब ये पावर शुड बी अ नॉन निगेटिव पावर. अगर वैसे हो तो हम क्या करेंगे, उसको सिर्फ जितने पावर है उतना हम इस आइगन वैल्यूज को पावर देंगे. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी is matrix x a minus k I has eigenvalues those lambda 1 minus k, lambda 2 minus k, lambda n minus k. Means suppose k I is another scalar term. k जैसे हमारे पास lambda I terms है, अगर k is another scalar multiple then it has a eigenvalues. That means it is just nothing but shift. This eigenvalues are shifted by k matrix. This form or this type is known as spectral shift. Okay, further, next property says the sum of eigenvalues of a matrix is equal to the sum of main diagonal elements, that is trace of A. Sum of eigenvalues क्या होते हैं, it is equal to sum of main diagonal elements. मतलब अगर हमें चेक करना होगा कि हमारे आइगन वैल्यू जो हमने फाइंड आउट किए हैं वो करेक्ट है या नहीं, तो क्या करो, उसकी एडिशन और डायगोनल एलिमेंट्स की एडिशन देख लो. अगर वो सेम आती है तो हमारे आइगन वैल्यू जो हमने फाइंड आउट किए हैं वो करेक्ट है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेज प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ ए. मतलब क्या, जो भी आइगन वैल्यूज हमने फाइंड आउट किए और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वो क्या होता है, आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट और डिटर्मिनेंट इक्वल होता है. तो अगर यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाए तो दिस इज द आइगन वैल्यू. सपोज वी हैव 1 2 3 फॉर दिस मैट्रिक्स ए. तो इसकी प्रोडक्ट क्या होगी, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3 हो जाएगी 6. अगर इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, सपोज क्या होगा डिटर्मिनेंट, 1 इंटू 6 माइनस 0 माइनस बाकी के टर्म्स तो 0 है, मतलब क्या होगा 6. तो अगर ऑब्जर्व किया जाए प्रोडक्ट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट. सो दीज आर द टू बेसिक प्रॉपर्टीज और यू कैन से main properties wherein you can check using which we can determine whether the eigenvalues which we have obtained are correct or not. तो क्या करना है, अगर once you find eigenvalues, check whether the sum is equal to the sum of diagonal elements and the product is equal to determinant. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं मतलब हमारे eigenvalues correct है. Okay, the further property says the eigenvalues of a symmetric matrix are always real. Symmetric matrix मतलब क्या होता है, Aij is equal to Ajth term for a given matrix, right? Or you can say A is equal to A transpose. ऐसे अगर मैट्रिक्स दिया जाए तो उसके आइगन वैल्यूज क्या होते हैं, हमेशा रियल होते हैं. Whereas that means and further we can say eigenvalues of A and A transpose are same. Okay, further, the inverse of matrix A exists if and only if lambda I is not equal to 0. मतलब उस आइगन जो भी मैट्रिक्स दिया जाएगा अगर उसके आइगन वैल्यूज हमें नॉन जीरो मिलते हैं तो ही उसके इनवर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर उसके आइगन वैल्यू 0 मिलते हैं तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता. ओके, एक आइगन वैल्यू अगर 0 आता है इसमें तो उसकी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होती. वही अगर नॉन जीरो सारे मिलते हैं तो उसकी इनवर्स एग्जिस्ट हो सकती है. ओके, फर्दर let us discuss properties of eigenvectors. So अभी theorem है, क्या कहता है ये theorem? If x is an eigenvector of a matrix A corresponding to an eigenvalue lambda, so is kx. So is kx मतलब क्या? kx भी एक eigenvector हो सकता है where k is any non-zero term. Then this eigenvector corresponding to an eigenvalue is not unique. Main aim क्या है इस theorem? What does this theorem says? This theorem states that the eigenvector corresponding to an eigenvalue is not unique. Means what? अगर suppose lambda equal to 2 आइगन वैल्यू मिली है और उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास आइगन वेक्टर आता है 1 माइनस 1 0, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं इसे ऐसे फॉर्म में भी लिख सकती हूँ t माइनस t 0.
that is t times my 1 minus 1 0. Correct? So t is any multiple, so you can obtain any vector, or you can obtain form of either direct 1 minus 1 0 or t times 1 minus 1 0. This is also valid. So if t takes any values, accordingly हमारी वैल्यू बदलती जाएगी. मतलब अगर t की वैल्यू 2 होगी तो ये आइगन वेक्टर होगा 2 minus 2 0. राइट? सो दिस मीन्स ये भी एक आइगन वेक्टर है, 2 minus 2 0 भी एक आइगन वेक्टर है. मतलब क्या कहता होता है, आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर is not unique. The second property says, suppose lambda 1, lambda 2, lambda n are distinct eigenvalues. Distinct मतलब सारे आइगन वैल्यूज अलग दिखाई देते, कोई भी उसमें से एक सेम नहीं है. मतलब सपोज लैम्डा की वैल्यू 1 2 3 ऐसी मिलती है तो ये होते हैं डिस्टिंक्ट. वही अगर लैम्डा की वैल्यू 1 2 2 ऐसी मिलती है तो ये होते हैं रिपीटेड आइगन वैल्यूज. Okay, so what does the case says? Second property says, if you have distinct eigenvalues of n cross n matrix, then the corresponding eigenvectors always form a linearly independent set. Linearly independent मतलब क्या? C1 C2 C3 0 आते. वेक्टर्स अगर याद करोगे, the relation C1 x1 plus C2 x2 plus Cn xn n equal to 0 is said to be, or the vectors x1 x2 is said to be linearly independent if C1 C2 C3 all are equal to 0. right? So similarly here distinct eigenvalues के लिए भी होता है. वही थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, for n distinct eigenvalues we obtain n distinct eigenvectors, but when two or more eigenvalues are same, it may or may not be possible to get a linearly independent vectors corresponding to repeated roots. मतलब क्या होता है, क्या क्या कहता है थर्ड प्रॉपर्टी, n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के लिए n वेक्टर्स तो मिलेंगे ही हमें, राइट? बट वही अगर केस होता है जहाँ पे हमें रिपीटेड रूट्स मिलते हैं, रिपीटेड आइगन वैल्यूज मतलब दो आइगन वैल्यूज है सेम है, तो दैट डजंट मीन हमें दोनों के लिए हमें अलग आइगन वेक्टर मिल सकता है, बट ये आइगन वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे या नहीं होंगे ये हमें we cannot say. It may or may not be possible. Fourth property says, an n cross n matrix may have less than or equal to n linearly independent vectors. Means कितने आइगन वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं एक n क्रॉस n मैट्रिक्स के लिए. इट मे बी इक्वल टू n और लेस देन n बट नॉट ग्रेटर देन n. okay, main one of the property, remember, eigen value can be 0 but eigen vector is may not be 0. मतलब एक आइगन वैल्यू तुम्हें अगर फाइंड आउट करोगे तो 1 0 2 ऐसे आइगन वैल्यूज मिल सकते हैं, बट 0 आइगन वैल्यू मिल गया इसका मतलब ये नहीं कि जो वेक्टर मिल रहा है वो आइगन वेक्टर 0 0 0 ऐसे मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा. हमें इसके करस्पॉन्डिंग भी एक वेक्टर एज अ नॉन जीरो वेक्टर ही मिलेगा. ओके, further now what is, when do we call eigenvectors are orthogonal, right? हमें लीनियरली डिपेंडेंट कह सकते हैं. ऑर्थोगोनल कब कहोगे, जब एक वेक्टर का ट्रांसपोज इनटू अनदर वेक्टर 0 आता है, तो ऐसे केस में वो दो आइगन वेक्टर्स को कहा जाता है ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर्स. मतलब सपोज तुम्हें एक वेक्टर x1 मिला है से 1 1 0 और सपोज दूसरा x2 वेक्टर मिला है से -1 1 0, तो x1 का ट्रांसपोज क्या होगा 1 1 0 और x2 का ट्रांसपोज क्या होगा -1 1 0. तो इसका प्रोडक्ट क्या होने वाला है, -1 + 1 इक्वल टू दैट मीन्स 0. तो ये क्या होगा, ये दो वेक्टर्स हो गए ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर्स. एंड आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट आइगन वैल्यूज आर ऑलवेज orthogonal. So ये थे कुछ properties of eigenvalues and eigenvectors. These properties help us to differentiate between various types of roots, various types of eigenvectors. तो eigenvalues find out करने के लिए basic, जब eigenvalues find out करते हैं ये क्या रखो कि जब उसे चेक कैसे करना है, उसकी ट्रेस फाइंड आउट करनी है, मतलब सम ऑफ डायगोनल और डिटर्मिनेंट, और वो इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल होगा और सम ऑफ डायगोनल रिस्पेक्टिवली होगा, तो वो आइगन वैल्यूज करेक्ट है. सो दीज प्रॉपर्टीज आर वेरी एसेंशियल एंड वेरी हेल्पफुल व्हेन वी सॉल्व द
examples. Next video, we will be seeing a few examples based on eigenvalues and eigenvectors. Thank you.